Uh, I would now request Shri Neeraj Kumar Gyagi, Joint Secretary, Access to Justice Division of Department of Justice, for his welcome remarks. Sir. Thank you, Asutosh. Respected Secretary, Speaker of the webinar, uh, panel lawyer, paralegal volunteers, VLEs, my colleague from Department of Justice, ladies and gentlemen, I will welcome you all on behalf of Department of Justice to this webinar. This webinar is just a tool to reach out to the common man. Department of Justice is in its constant effort trying to reach the common man, because we feel that a act and a rule which are already there is not going to serve the purpose unless the common man has got a fairly good understanding that what does it mean and what they can expect out of it. So we as a department are constantly implementing the scheme of legal literacy and awareness. Till last year, it was focused on Northeast and the UT of Jammu, Kashmir and Ladakh. From this year, we have launched this in a pan-India level, and our effort is to make every common man aware about the various rules and various acts for which have been formed to, to benefit them. They are the target of this very act and rule, just to make them understand that what it holds to them and how they can derive benefit out of it. I'm very happy to report that this program in the northeastern state has resulted in creation of a huge plethora of IEC material, 9 lakh copies of such material in 69 laws, translated into 26 languages and dialect. We have created a pool of 25,000 master trainers. We have trained students, village chiefs. We have done and covered a number of people through our program. And since we have launched this in a pan-India level, idea is to do this on a national level. I will not dwell upon this particular subject of this Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. But this act in itself is extremely important, because for the first time it was realized in 2005 that we need to have this act, and a sizable population is affected by it. Each one of us is affected by it, and I am very happy that today's webinar is going to focus on this very, very important issue. This is first webinar which Department of Justice is organizing. We will be holding more in coming month on different topics. And once again, I welcome you all, and I look forward to listen all the expert on the issue, all the stakeholders who are working from very close quarter on this particular issue, to have a fruitful discussion and way out of it. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your welcome remarks and highlighting importance of pro-poor laws, especially for common man. And you also highlighted achievements of NEJK projects and how we would like to go ahead in our Pan-India program. Now I request Shri Ashutosh Pandey, Senior Research Officer of Information for Women, for his presentation on implementation level challenges of Protection of Women from Domestic Violence Act and best practices around. Mr. Shri Ashutosh Pandey, Senior Research Officer, NCW. Before he start, I would like to give his brief introduction. Shri Pandey has done LLM from Kumaon University, practiced in subordinate courts of Delhi, Delhi High Court, Supreme Court. He also worked as a law professor for Raksha Shakti University, Gandhinagar, Gujarat, National Institute of Criminology and Forensic Sciences, and Delhi Institute of Rural Development. He is presently working as a Senior Research Officer with National Commission for Women. Mr. Pandey, you are invited for your presentation. Thank you so much, sir. Thank you so much,
for these wonderful words. I thank Ministry of Law and Justice for inviting me for this webinar. Uh, Sir, before starting this, uh, can I ask any of the participants, because I have the list with me which says that these will be the paralegal volunteers and the pro bono advocates. So, a single individual or a single participant, I just want to know about him, about his impression regarding this workshop, regarding this webinar, so that I can take it forward in that manner, if it is possible, or else I'll start my presentation. Hello. Ashutoshi, we are having a dedicated question and answer session where Okay, we okay. where we interact with participants. So I would request you to start. Please start the presentation. Okay. So the topic given to me is implementation level challenges of PWDVA and best practices, Domestic Violence Act. So in the first slide, please, yeah, in this first slide, there is a question being asked from the participant that what is the difference between sex and gender? So the impression regarding the sex in your minds and regarding the gender, how these two words they are different. We will be discussing them further, but to start with, I'll be saying that sex is associated with biological things. It is the biology, the biological determination, and gender is culturally defined. So when this act was enacted, and before that, we have seen this kind of the journey of violence or the domestic violence which the women in our country they have experienced, that the legislature has taken into account this violence, and by 1983 we have certain amendments in our Indian Penal Code by which certain provisions were added. For instance, 498A, the cruelty by husband and his relatives. So uh, taking this forward, and since 1983 we have moved to 2005 when this Protection of Women from Domestic Violence Act was enacted, and it's been 15 years, more than 15 years, the violence is unabated. What is the reason behind that? So I'll be discussing more with the implementation aspect, but if we see the provisions of the act, which the learned experts after me, they will be taking the legal provisions as well as the role of protection officers and service providers. But just to sow the seed in the minds of the participants, I can say at the outset that this act is objective in nature. This act has objectivity. All the 37 provisions, they are well enacted. But how this implementation is still lagging because the humans are involved. There is subjective element to it. Please, the next slide. Yeah. So when we know that there is a subjective element to it. Subjective element because there are many stakeholders, and we know that there are beneficiary, and the beneficiary will be the aggrieved woman in this act. So the kind of violence being defined under the act is the physical abuse, sexual abuse, verbal abuse, emotional abuse, economic abuse. So when the aggrieved person, aggrieved lady, she experienced these kind of abuses, what is the remedy for her? Where she will go? She will ultimately look for certain kind of mechanism wherein these things can be cured. So is it available in this act? This question is for all the participants who will be asking the questions later on. I'm just putting the questions because I have to set the stage, and we will look into all these aspects together. Next slide, please. The key challenges, if you see,
in implementing this act from the prima facie, if we look into these challenges, they are the implementation of the legal provisions. They are the legal provision wherein there is a refusal of the police to file a case in some cases due to pressure from the accused family. We have seen this thing in most of the acts, and the same kind of thing we have seen in this act as well. A low rate of conviction in cases under 498A, which results in loss of confidence of the victim and aggrieved women. The delays in the criminal justice system resulting in lack of support. Often the woman has to fend for herself and children as the court procedure takes long. So these are the challenges, and we know that, in fact, today also we are looking for updating our legal knowledge. The provisions and the landmark judgments which will be taken up in this session, that these challenges, they are very much there. Law has a dynamism. Law moves as the society develops. So likewise, the kind of violence and the kind of challenges being faced as the time passes, they are being getting newer dimensions also. Next slide, please. So in the next slide, I have taken the role of a protection officer, which will be taken up by the next speaker also. I'll just look into certain things wherein there is a problem of implementation. The pre-litigation stage, the litigation, and post-litigation. These three phases wherein the victim has to go through, or the stakeholders, the role of stakeholders which play a crucial role in all these stages. Next slide. The participants will be learning about the domestic violence complaint. Next, please. Next slide. How a domestic violence complaint is filed, how a protection officer will be approached. Next. How protection and support will be given to the victim. So the first stage which the victim looks for is certain kind of hand holding. So is there any kind of provision which is available under the act? Where she will go? The law provides that there are various stakeholders, and one of them is protection officer, the counselors, the medical officers, the police officers. But when it comes to implementation, I have the list with me. Recently, we had conducted one protection officers program in collaboration with Labasna, Missouri. We have seen that there are the number of probation officers appointed, they are very less. And also, they are even part-time officers. Not only this, they are either appointed as the child development project officers, and they have the extra charge as a protection officer. So when it comes to the implementation of the provisions of this act, can it be said that the part-time officers, they will be giving justice to the work which is required? Because if we see that the number of cases being rising, although the government is doing its best kind of remedy, best kind of provisions, they are being enacted, and also the amendments being made, the modernization of forces being done, but still there is a long way to go. The provisions of this law, they are not being implemented, or I can say the results which we have obtained till date, they are not very satisfying. I will use the word satisfying and not satisfying, because as the things go on, as the provisions being implemented, there is an element of human being, the element of subjectivity. So the need of the hour is the development of standard operating procedures.
Next slide, please. The standard operating procedures not only provides for us a mechanism wherein every kind of thing being described in a manner. For instance, case study. Through case studies, the various stakeholders will be able to know the responsibility. I'll be just concluding in 2 minutes. I know there is a paucity of time and next speakers they are in the line. So the standard operating procedure I was discussing about. So wherein the case study method being used, the frequently asked questions. Yes, sir. There are participants and they are conversant with Hindi. So if you can, अच्छा important ठीक है aspect सर what बिल्कुल can बिल्कुल you can highlight the important मैं challenges इसी what वजह you से can पहले highlight. पार्टिसिपेंट का जानना चाह रहा था उनसे बात करके कोई बात नहीं सर यहाँ पे हम घरेलू हिंसा की बात कर रहे थे और हम उनको यहाँ पे किस तरीके से सपोर्ट किया जाए या किस तरीके से इस अधिनियम को लागू करने की हम बात कर रहे थे जिसमें संरक्षण से लेके उनकी सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा के लिए हम यहाँ पे महिला की सुरक्षा और किस तरीके से जितने भी स्टेक होल्डर्स पूरे इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में लगे हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे अभी बात करी मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए अपने को बहुत सीमित शब्दों में यहाँ पे अपना कंटेंट खत्म करूंगा क्योंकि नेक्स्ट हम जब लीगल प्रोविजंस लीगल एस्पेक्ट्स और रोल ऑफ वुमेन सेल और सिविल सोसाइटी ग्रुप लेंगे तो लास्ट में ये वाली सारी चीजों का मैं एक बार से दोबारा रिकैप करना चाहूंगा बिकॉज ultimately it is the human element which is involved and that human element the subjectivity is responsible for the laggard approach और इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में जो सुधार लाने की बातें हैं एक्ट बहुत अच्छा है इसमें ऑब्जेक्टिविटी है बट जो सब्जेक्टिव एलिमेंट के चलते जिसमें पुलिस का रोल है पुलिस के पास कोई महिला आती है और वहां से उसको प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास भेजा जाए क्या डेली डायरी में एंट्री होती है नहीं होती है कैसे ट्रेनिंग देनी चाहिए वो हम सारी चीजों को लेंगे तो मैं अपने यहीं पे अपने को रोकते हुए I'll pass over the mic to you sir. Ashutosh ji, and you highlighted the aspects especially started from gender and basically you pointed out because of violence against women and other challenges we also brought. Especially you highlighted one thing, we need dedicated protection officers. So if you don't have one kind of protection officer, it is The need for professional protection officers. Yes, very right. So I would request you to be present there, to remain present, and Yeah, I'm here, sir. And we'll have some questions. Thank you so much. Thank you so much. Ashok. Now I request Shri Dayasankar ji, Deputy Secretary from Ministry of Women and Child Development, for his deliberations on role of protection officers and service providers. Shri Dayasankar ji from MWCD. Good afternoon all. Sir, मेरे से पहले shall I speak in Hindi or Hindi and English mix? Mix, sir. It would be good, sir. Okay. Mix, yes. Thank you. So मेरे से पहले Mr. Ashutosh Pandey NCW से थे. So he has broadly covered what is domestic violence act and what are the rules of protection officer, etc. So I am not repeating what are the provisions of the act for just saving the time. And we'll come to directly to the point that what is the role of protection officers and service providers in respect of the DBA.
सो हम लोगों को पता ही है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा इशू है जो इस कंट्री में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड एक बहुत ही बड़ा महिलाओं के खिलाफ जो भी होते हैं इंसिडेंट्स अत्याचार होते हैं उनका एक सबसे बड़ा कारण है। अगर आप किसी भी साल के एनसीआरबी के रिपोर्ट को देखेंगे तो इसके अंदर में जो क्रुएल्टी बाय हस्बैंड का क्राइम है उसका नंबर सबसे ज्यादा। तो ऑलमोस्ट नियरली 4 लाख केसेस रजिस्टर्ड होते हैं क्राइम अगेंस्ट वीमेन के। उसमें से मोस्ट ऑफ द केसेस पर्टेन टू क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स, और ये 498 के अंदर में आईपीसी में दर्ज होता है। एंड वी हैव सिविल एक्ट डीवी एक्ट ऑफ 2005 जो कि हमारे मिनिस्ट्री के द्वारा इनेक्ट किया गया था। पर्पस यही था कि जो महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हैं, बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस जब होता है तो न केवल महिला के खिलाफ में फिजिकल सेक्सुअल और इमोशनल हैरासमेंट होता है, बट इसका प्रभाव उसके महिला के कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी और उनके सेल्फ एस्टीम के ऊपर भी। तो ये बड़ा आवश्यक हो जाता है कि एक ऐसा पूरा इकोसिस्टम हो जिसमें महिला की सेल्फ एस्टीम, उसकी डिग्निटी और उसके रेस्पेक्ट की प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखा जाए, और जो भी इससे रिलेटेड इकोसिस्टम में whether they are duty bearers, whether they are members of judiciary or the society as a whole, they should take care of such victims. But unfortunately होता उल्टा है कि अगर कोई महिला अपने परिवार के किसी मेंबर के खिलाफ कोई शिकायत लेके पहुंचती है, चाहे वो हस्बैंड हो या ससुर हो या और कोई ससुराल वाले हो या अपने मतलब जो मायके की तरफ से होते हैं, जो उनके भाई हो या कोई और भी परिवार से, तो बजाय उनकी मनोस्थिति को समझने के महिला के ही खिलाफ ऐसा एक माहौल बनता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। सो दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ द होल स्टोरी। और यहाँ पर जैसे कि पहले वक्ता ने बताया था, प्रोटेक्शन ऑफिसर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हैज बीन एनविसेज्ड अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, बिकॉज उनका काम न केवल उनकी हैंड होल्डिंग करना है बल्कि उनको जो लीगल एडवाइस दिलाना, उनके केस को फाइल कराना, उनके केस को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, उनके लिए दीज आर द की फंक्शंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर कि वो एक DIR मेंटेन करते हैं, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। सो ए फॉर्मेट हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड जिसमें वो पूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं कि किसने वायलेंस किया, किस नेचर का वायलेंस था, कब हुआ, कहाँ हुआ, द कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड। फिर उनका काम ये भी होता है कि वो उसको फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। एक्ट के अंदर में प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑर्डर की एक इसके अंदर में एक प्रोविजन है कि मजिस्ट्रेट विल पास एन प्रोटेक्शन ऑर्डर, और उसके अंदर में वो रिस्ट्रेन करता है जो भी वायलेंस करने वाला व्यक्ति है उसको। फिर अगर वो नहीं मानता है तो उसके अगेंस्ट में दोबारा से वो मजिस्ट्रेट के पास में जा सकते हैं फॉर ऑर्डर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन। अगर वो महिला को जरूरत है कि इफ शी नीड्स सम काइंड ऑफ मेडिकल असिस्टेंस तो उनको डॉक्टर के पास भी ले जाना, उनका इलाज कराना, वो भी उनकी जिम्मेदारी होती है। देन अगर महिला को कोर्ट में केस लड़ने के लिए किसी प्रकार के लीगल एडवाइस की या केस के फाइलिंग में भी अगर सपोर्ट की जरूरत है तो दे अरेंज फॉर द advocates through the DLS. We all are aware that we have a National Legal Services Authority है, उसके अंदर में नालसा है, स्टेट लेवल पे सालसा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डालसा है। तो वहाँ से वो एडवोकेट प्रो बोनो काम करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ही स्कीम है।
तो प्रोटेक्शन ऑफिसर की एक जिम्मेदारी यह भी है कि प्रॉपर लीगल एडवाइस भी उपलब्ध करें और केस फाइलें करें। इसके अलावा अगर वो महिला नहीं चाहती है कि मुझे अपने जिस फैमिली में जहां पर उनके साथ में कोई इंसिडेंट हुआ है, वो अगर वहां पर जाना नहीं चाहती है, ज्यादातर केस में ऐसा होता है, खासकर वेयर सम काइंड ऑफ इंजरी इज देयर, कोई फूट फाट हुई है, कोई ऐसी इंजरी हुई है, तो इमीडिएटली साइकोलॉजिकली भी महिला तैयार नहीं होती है कि वो इमीडिएट जाके अपने हस्बैंड या फैमिली के साथ। तो ऐसी हालत में दे अरेंज फॉर द शेल्टर्स फॉर देम, कि हर एक जिले में हमारे मंत्रालय की भी स्कीम है और दूसरे जो स्टेट गवर्नमेंट्स में भी कई जगह पे चलते हैं इस तरह के होम्स, तो वहाँ पर उनको रहने की और उनके टेक केयर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ये भी उनकी एक जिम्मेदारी में होती है। इसके अलावा उनका काम महिला को उनके साथ होने वाले Sir, I डोमेस्टिक। request you. सर, I request you to just conclude, please, because yes sir, I not take more than 5 minutes, yeah. 3 to 4 minutes। सो ये सारी चीजें हैं। एक्ट के अंदर में बहुत अच्छे प्रोविजंस हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं कि ये सारी फैसिलिटी भारत सरकार ने महिलाओं को दी है, लेकिन इसके बावजूद क्या ग्राउंड लेवल पर महिला को वो फैसिलिटीज मिल पाती हैं? क्या वो जब कोर्ट में केस करना चाहती है तो क्या उनको प्रॉपर ढंग से उनके केस को डिफेंड करने के लिए एडवाइस मिल पाती है एडवोकेट्स की? क्या प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के तरफ से उनको जितना टाइम दिया जाना चाहिए वो दिया जाता है? ये सारे क्वेश्चंस का जवाब में कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, बिग क्वेश्चन मार्क, बिकॉज मेरे पास जो मंत्रालय में आई एम लुकिंग आफ्टर द वुमेन वेलफेयर डिवीजन, जहाँ पे डायरेक्ट कंप्लेंट्स भी आती हैं। वी हैव अ कंप्लेंट ईमेल आईडी आल्सो, डेडिकेटेड कंप्लेंट आईडी, और मिनिस्टर के पास भी बहुत सारी कंप्लेंट आती है। एंड मेरा जो अपना पर्सनल, मैं एक एक रिप्रेजेंटेशन खुद पढ़ता हूँ, सबसे ज्यादा मोर देन 70 to 80% जो केसेस होते हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस, और कंप्लेंट ये होती है कि पुलिस में एफआईआर करा दिया, पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, कोर्ट में केस चला गया, 2 साल तक कोर्ट ने कुछ नहीं किया, प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू हो गए हैं लेकिन उसको मेरा हस्बैंड नहीं मान रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, एंड दिस कैन बी पॉसिबल कि वो जब तक इस पूरे सिस्टम को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, जब तक समाज के अंदर में लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं आएगा, जब तक कि ड्यूटी बियरर्स के अंदर में इस बात के लिए चेतना नहीं आएगी कि उनको अपना काम किस तरीके से करना। अनफॉर्चुनेटली इसके इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी जो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है, ज़्यादातर स्टेट में मेरा एक्सपीरियंस, जो हमारा एक्सपीरियंस है मंत्रालय का, एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल, मैक्सिमम में स्टेट में, जैसे एनसीडब्ल्यू के भी रिप्रेजेंटेटिव ने बताया था, वो एडिशनल चार्ज में किसी डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर को, डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन वेलफेयर ऑफिसर को या किसी और को एडिशनल चार्ज में, एंड दे आर बर्डनड विथ implementation of so many schemes, so many things, redressal of grievances, there are so many other jobs to do। वो अपना टाइम जितना देना चाहिए वो डिवोट नहीं करते। इसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, बट दे आर ऑल्सो मेनी टाइम्स नॉट गेटिंग adequate hand holding and support from the government officials। तो ये सारी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे मंत्रालय ने कुछ अच्छी चीजें भी हैं, ये तो निगेटिव में बातें हुई, लेकिन अच्छी चीज ये है कि आवर मिनिस्ट्री हैड इम्प्लीमेंटेड वन स्कीम ऑफ वन स्टॉप सेंटर्स इन 2015। 704 जिले में, बस फिनिश कर रहा हूँ सर, 2 मिनट दे दीजिए। 2015 में एक वन स्टॉप सेंटर की स्कीम दी थी जी। तो वन स्टॉप सेंटर के अंदर में 100% फंडिंग भारत सरकार की है, और इसके अंदर में 5 तरीके की जो इंटीग्रेटेड सर्विसेज हैं अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे, उनको 5 डेज तक का टेम्पररी शेल्टर,
उनकी मेडिकल हेल्प, उनको डीएलएसए के थ्रू लीगल हेल्प कराना, और उनकी मतलब उनको पुलिस फैसिलिटेशन, अगर वो पुलिस में एफआईआर कराना चाहती है, कोई सपोर्ट चाहती है, वह भी उसमें किया जाता है। और उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए भी एक काउंसलर का प्रोविजन है। 704 ऐसे वन स्टॉप सेंटर कंट्री में ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं, और आने वाले दिनों में हमारे मंत्रालय की एक नई स्कीम मिशन शक्ति लॉन्च होने वाली है, जिसके अंदर में हमारी ये कोशिश होगी कि इस तरह के जो वन स्टॉप सेंटर हैं, जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, दे हैव अ वेरी इफेक्टिव एंड विजिबल प्रेजेंस इन द एट द डिस्ट्रिक्ट। तो हम चाहेंगे हम कि वो और भी जगह पे बने, और दे आर सर्विंग द वायलेंस अफेक्टेड वुमेन वेरी वेल। और हमारी ये कोशिश होगी कि इस पूरे सिस्टम को स्ट्रेंथन करें, और जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हमने निर्भया फंड के अंदर एक वीमेन हेल्प डेस्क बनाने के लिए भी हर एक थाने में एक फंडिंग का प्रोविजन रखा है। So we hope that in the coming days, with the mission Shakti being implemented and with the convergence of activities of all the duty bearers, चाहे वो डालसा हो, मेडिकल के लोग हों, चाहे हमारे वन स्टॉप सेंटर हो, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हो अंडर डीबीए, तो ये जब सब मिल के काम करेंगे, होपफुली अ डे विल कम when we will see that no women faces violence. You nicely highlighted dignity and self-respect of women. Role of protection officers, like starting from DIR, filing of DIR and submitting it before magistrate. And you also talked about OSCs, how OSCs are functioning. एक छत के नीचे जो जो सुविधाएं विक्टिम्स को दी जा रही हैं, आपने बहुत अच्छी तरीके से उसे हाईलाइट किया. Thank you so much, sir. And there will be some questions in the end, and I'll request you. I request you to be present here, to remain present here. And now Sure, I sir. request, sir. Now I request our next speaker, Ms. Shalini Agnihotri, IPS officer. She is Superintendent of Police, Mandi District of Himachal Pradesh, for her presentation on role of women's cell in cases of domestic violence. Shalini ma'am. Yeah, before she start, I would like to briefly give her introduction. Ms. Shalini Agnihotri is 2012 batch IPS officer, and she has served as ASP Shimla, Kangra district. She is also served as SP Kulu, and presently she is SP of Mandi district of HP, and she is there since 2020. She has worked as supervisory officer for the first women's police station in HP. She was posted at Shimla, Kangra, and when she started her work, the first investigation case she got of a blind rape victim, and within 45 days, her investigation was over, and how she began her journey in her job. Ma'am, I invite you for your presentation. Thank you, sir, for your very kind words. I just want to confirm that the presentation is running at your end, or should I share my screen with you? Ma'am, we have this thing on our screen. Right.
I have one announcement for our participants. This webinar is also available through Facebook, and if participants have a question, if they want to ask something, they have some query, they can use the chat box. They can put their question, and our colleagues are there uh, to take up their questions, and we can put it before the right speakers. So you can use this chat box for putting your queries or clarifications related to DB Act. Available with you. Your presentation is available with you. If you start, because we are facing some problem at our end. If you have readily available your Can you, presentation, please are we start. audible? Can you? Yes, Can you? I am Uh, trying to share my presentation. Just give me a. Oh, that's very nice because we are having some technical issues here. So can you see the presentation? Is it visible? Not Can yet. you share Yes, your it's visible. screen? It's visible. Okay. Great. Yeah, So I'll now start, I sir. think, yeah, please carry on. With the Is permission it? of Honorable Chair and speakers before me, सभी participants. First of all, मैं Ministry of Justice sir, Joint Secretary sir represent कर रहे हैं sir. I would congratulate on this very good initiative sir. बीइंग अ पुलिस ऑफिसर सर, जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में आई डेलिबरेटली मेंशन कि मेरी लाइफ का जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन का केस था सर वो एक ब्लाइंड गैंग रेप था. सो इट्स अ वेरी इमोशनल फील्ड जिसमें बहुत सारा एक परसेप्शन वाइज भी और अदरवाइज भी सोशल जो एक मैसेज जाता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन का, वो बहुत ही एक नेगेटिव मैसेज जाता है. और अनफॉर्चुनेटली ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड ओवर, जैसे मेरे से पहले भी एक स्पीकर ने कहा था कि दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस. So I have tried to justify my presentation within the time limit given. So just to सिर्फ introduction दे, क्राइम रिपोर्टिंग को इंक्रीज हुआ है इंडिया में. वो 57 जो हम इंक्रीज महसूस कर रहे हैं रिपोर्टिंग में, सिर्फ क्राइम की रिपोर्टिंग में, वो 45 क्राइम अगेंस्ट वुमेन के जो पेंडेंसी रेट्स है, जो कि इन्वेस्टिगेशन टाइम पे नहीं हो पाई है या अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं, उसके फिगर्स में 33% है. और जो चार्जशीट करने का रेट है वो 76% है. दैट मीन्स कि करीब करीब 33% केसेस जो हैं वो चार्जशीट जो है कोर्ट में नहीं हो पाते हैं. चार्जशीट का मतलब ये है कि पुलिस उसमें जो एक्यूज है उसको गिल्टी फाइंड करती है और उसके हिसाब उसके अगेंस्ट कोर्ट में जो है अपना फाइनल रिपोर्ट बना के देती है. बट सबसे इंटरेस्टिंग फिगर जो जैसे जो मुझे टॉपिक दिया गया है, रोल ऑफ वुमेन सेल इन केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, इसमें मैं मेंशन करना चाहूंगी कि इस तरह के इनिशिएटिव्स के बाद, महिला थाना या फिर वुमेन सेल के इनिशिएटिव के बाद जो रिपोर्टेज है वो करीब 22% कंट्री में इंक्रीज हुई है. और नेचुरली जब रिपोर्टेज इंक्रीज हुआ है तो उसके साथ ही जो पुलिस का इंटरवेंशन है या फिर जो एक्शन है, जो लीगल कोर्स है, वो भी डेफिनेटली इसमें इंक्रीज हुआ है. मैं ये कुछ एडवांटेजेस मैंने लिस्ट आउट किए हैं कि किस तरह से जो महिला थाना या महिला सेल जब खुलता है तो किस तरह के एडवांटेजेस एक सिस्टम में विक्टिम के माध्यम से और एक बिहेवियर में, जो पुलिस बिहेवियर है उसमें हम देख सकते हैं. तो फर्स्ट मैं जो सरकारी तौर पे सरकारी एक सिस्टम में जो एडवांटेजेस इस तरह के इनिशिएटिव से आए हैं उसके बारे में बात करना चाहूंगी. तो जैसे कि सभी जानते हैं कि जो महिला थाना है वो ज्यादातर ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन होता है. वहाँ पे एसएचओ भी महिला अधिकारी होती है और जनरली उसका जो सुपरविजन है वो किसी महिला अधिकारी, सीनियर महिला अधिकारी को दिया जाता है. साथ ही जो मैक्सिमम उसमें स्टाफ
डिप्लॉयड होता है वो सभी महिलाएं होती हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन और उनको कह सकते हैं कि विद टाइम एक्सपीरियंस के साथ वो एक तरह के इस फील्ड में एक्सपर्ट बनते हैं, जो कि चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ विमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, रेप के केसेस हो, या फिर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के केसेस हो, मोलेस्टेशन के केसेस हो, इस तरह के जितने भी केसेस है उसमें एक एक्सपर्टीज विद टाइम इस पर्टिकुलर ग्रुप की बनती है, और वो लीगल पैरामीटर्स में डिस्कशन के साथ स्टेक होल्डर्स के साथ बात करते करते अपने आप को एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन इसमें हम बना लेते हैं। सेकंड है कि क्योंकि महिला थाने खुलते हैं या महिला सेल खुलते हैं, तो जो वर्क फोर्स में जो महिलाओं की रिक्रूटमेंट है उसमें भी बढ़ावा आता है। बहुत ही एक डिस्मल फिगर है अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में, जिसमें महिलाओं की जो प्रतिशतता है कि कितनी महिलाएं जो हैं वो पुलिस फोर्स में हैं, तो करीब 8-10% के करीब नेशनल लेवल पे ये फिगर है, जो कि किसी भी यूएन स्टैंडर्ड से या ग्लोबल स्टैंडर्ड से काफी नीचे है। हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट में बहुत सारे इस तरह के इनिशिएटिव हुए हैं, तो ये फिगर थोड़ा बेटर है, लेकिन फिर अभी भी हम 50% या 33% जिस तरफ हम जाना चाहते हैं उससे काफी पीछे हैं। तो इस तरह के जो सेल्स बनते हैं या महिला थाने खुलते हैं, तो ऑफिशियली महिलाएं जो है उनका रिक्रूटमेंट जो है विभाग में बढ़ता है। थर्ड है कि एक एनकरेजिंग एनवायरनमेंट बनता है। अभी मुझसे पहले दो स्पीकर से बात कर रहे थे कि शिकायत कहाँ करें या शिकायत किसको दें, पुलिस एक्शन लेती है नहीं लेती है, पुलिस एक्शन लेने के बाद भी समस्या का हल होता है या नहीं होता है, कोर्ट कोई ऑर्डर पास करता है, चाहे वो मेंटेनेंस हो, रिलीफ हो, प्रोटेक्शन ऑर्डर हो, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर आम लोग कहाँ जाए और वो क्या करें। तो ये जो महिला सेल है और महिला थाना है, ये एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और एनकरेजमेंट महिलाओं को रहती है कि वो इस तरह की रिपोर्ट जो है उसको खुलकर करें और बढ़ा के करें, और हर एस्पेक्ट्स पे जो है इस चीज को देखा जा सके। और ये जो लास्ट है रिड्यूस्ड करप्शन, कुछ स्टडीज ऐसा कहती हैं, हालांकि फील्ड पे मैं ये कहूंगी कि थोड़ा सा बायस स्टेटमेंट है, लेकिन महिलाओं के एंट्री के साथ जो है थोड़ा सा मे बी करप्शन कमी होती है, या फिर ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा एक एटमॉस्फेयर ऐसा बनता है जिसमें करप्शन को उतना एनकरेजमेंट खासकर पुलिस विभाग में उसमें कमी आती है। नेक्स्ट जो मैं एक पहलू रखना चाहूंगी कि किस तरह से जो हमारा जनरल बिहेवियर होता है उसमें किस तरह से महिला सेल जब खुलते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस हम देख सकते हैं। जैसे जनरली जो डोमेस्टिक वायलेंस खासकर ये एक ऐसा वाइड टर्म है जिसमें हर तरह के अब्यूज इंक्लूडेड हैं। जैसे मुझसे पहले जो फर्स्ट स्पीकर थे उन्होंने शेयर किया था कि अब्यूज किसी भी माध्यम से हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, मेंटल हो सकता है। तो अब्यूज का डेफिनेशन बहुत वाइड है, और जनरली ऐसा होता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस है उसमें एक जनरल धारणा ये है कि एक थप्पड़ मारने से या गाली गलौज से जो है वो घर परिवार नहीं टूटना चाहिए, और महिला को जो है एडजस्ट करना चाहिए, या इस तरह का जो एक जनरल टेंडेंसी है उस पे फोकस्ड एक बिहेवियर जनरली सोसाइटी में प्रिवेल करता है। क्योंकि महिला सेल होते हैं और उनकी ट्रेनिंग इसी इसी पर्टिकुलर फील्ड में होती है, और इसी मेंटल बायस को दूर करने के लिए उनको ट्रेन किया जाता है, और वो बार बार इसी तरह के केसेस को डील करते हैं, तो वो उनका जो एक्सपीरियंस होता है और जो व्यवहार होता है वो इसमें काफी चेंज आता है। नंबर 2 बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जनरली महिलाओं ये एक महिला के मुंह से दोबारा से एक थोड़ी सी बायस बात है, लेकिन ऐसा फील किया गया है, रिसर्चर्स भी इसमें बहुत सारी स्टडीज भी इस तरह से रिजल्ट इसका कंक्लूड करती हैं कि जनरली महिलाओं में जो प्रो सोशल ट्रेड्स होते हैं वो जनरली ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनका जो रोल है बहुत एक घर में एक सेंट्रिक रोल रहता है, सारा घर जो है किसी महिला के इर्द गिर्द ही घूमता है, तो उनमें जो जनरल टेंडेंसी है सोशल ट्रेड्स को समझने की और उनको एक्सेप्ट करने की और समझाने की, वो जनरल टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा होती है। और थर्ड जो एडिड डायमेंशन है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, एम्पैथी और कंपैशन जो है किसी अन्य महिला के लिए या फिर एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन से उसमें उनका व्यवहार बेटर पाया जाता है। सबसे जरूरी जो मैसेज यहाँ पे आज के पार्टिसिपेंट्स है जो वापस लेके जा सकते हैं कि इन महिला सेल्स का और महिला थानों का जो एडवांटेज है वो विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या है। तो मुझसे पहले भी ये बात शेयर की गई है कि ये एक वन स्टॉप सेंटर की तरह काम करता है। यहाँ पे काउंसलिंग के माध्यम से इंक्वायरी, रजिस्ट्रेशन, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि फर्स्ट स्टॉप पे महिला जो है वो क्राइम रजिस्ट्रेशन या एफआईआर करने के पक्ष में नहीं होती हैं। वो चाहती हैं कि उनके इन लॉज को, उनके हस्बैंड को बुलाया जाए और उनकी काउंसलिंग की जाए, और कोई छोटी मोटी जो उनके मनमुटाव है या छोटी सी घर की कोई सिचुएशन है जिसको पुलिस के इंटरवेंशन से सही किया जाए। और कई केसेस में ये बहुत ही एक कामयाब तकनीक है कि काउंसलिंग से और बार बार पुलिस इंटरवेंशन से जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसमें कमी पाई गई है।
कई जगह रजिस्ट्रेशन से पहले एक इंक्वायरी कंडक्ट करने की बात होती है, खासकर जो डाउरी रिलेटेड केसेस होते हैं या ऐसे केसेस जहाँ पे जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो सेपरेशन चाह रही है या फिर एफआईआर करने के बाद उसको आगे फर्दर लीगल कोर्स में ले जाना चाहती है। नंबर दो, ये जो सेल्स हैं इसमें ना सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस बल्कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन, किसी भी, चाहे वो साइबर क्राइम भी हो, तो उस तरह की कंप्लेंट्स या फिर ईव टीजिंग जिस तरह हम समझते हैं, इस तरह की कंप्लेंट्स को भी रिपोर्ट किया जाता है और एक ही सेंटर पे आप जाके जो किसी भी तरह का महिला कोई उत्पीड़न या क्राइम फील कर रही है, फेस कर रही है, उसको रिपोर्ट किया जा सकता है। साथ ही ये जो सेंटर्स हैं ये अवेयरनेस, असिस्टेंस और लीगल एड की एक जो माध्यम बनते हैं। फर्स्ट की जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, चाहे राइट टू इनहेरिटेंस है, चाहे आईपीसी के लॉ है, सीआरपीसी के प्रोविजंस है, उसकी अवेयरनेस इन थानों से के माध्यम से, इन सेल के माध्यम से होती है। और साथ ही जो लीगल एड और असिस्टेंस, जैसे अभी मुझसे पहले मेंशन किया गया है कि प्रो बोनो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लीगल एड प्रोवाइड करने के प्रोविजंस है, उसके बारे में भी जो जानकारी है इन सेल्स के माध्यम से हम प्रोवाइड करवाने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही इन जो पर्टिकुलर एरियाज में भारत सरकार द्वारा और निर्भया फंड में भी खासकर इस चीज को बढ़ावा दिया गया है कि इस तरह के सेल्स में या महिला थानों में या अदरवाइज नॉर्मल पुलिस स्टेशन में क्रैश और वेटिंग रूम महिलाओं के सेपरेट जो है उस तरह की फैसिलिटीज हो, ताकि एक कंफर्टेबल और वेलकमिंग एनवायरनमेंट हम विक्टिम को दे पाए, जो आमतौर पे पुलिस स्टेशन में या फिर इन जनरल जो पुलिस सेटअप है उसमें नहीं देखा जाता है। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ही सेफ्टी का प्रोविजन है, जिसमें कंप्लेनेंट या विक्टिम जो भी हमें अप्रोच करती है उसकी सेफ्टी और कोई भी विटनेसेस हो उनकी सेफ्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर को दी गई है। और ये एक एरिया है जिससे जो कंप्लेनेंट महिला हैं उनको जो है कॉन्फिडेंस भी आता है और साथ में उनकी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी पुलिस वाले बनते हैं, तो वो एक मैसेज जो है पॉजिटिव फील्ड में जाता है। इसके साथ ही जो महिला सेल या महिला थाना है वो रेगुलरली नेटवर्क करते हैं और लाइजनिंग करते हैं हॉस्पिटल्स में, कोर्ट्स में, आश्रम्स में, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स में, चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज के साथ, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड और जो डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं डीडब्ल्यू के साथ और बाकी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे जो डिफरेंट हेल्प इस तरह की महिला की स्ट्रेस में हम उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं, वो सभी जो लाइजनिंग है वो एक ही जगह से करवाई जा सकती है। इसके साथ ही क्योंकि पुलिस थाना है और पुलिस थाना 24/7 हर दिन जो है साल भर चलता है और ये इमरजेंसी रिस्पांस हेल्पलाइन की तरह कार्य करता है, इसमें कोई भी शिकायत है वो फर्दर जो है उसको प्रोसीड किया जाएगा। अभी जो लेटेस्ट जैसे हिमाचल प्रदेश में निर्भया फंड के माध्यम से ही हमने कुछ मोबाइल पेट्रोल्स परचेज किए हैं, जिसमें हर एक महिला थाने को एक पेट्रोलिंग व्हीकल दिया गया है, जो कि स्पेसिफिकली जो कॉलेज, स्कूल, मार्केट, बस स्टैंड जहाँ पे लड़कियों से छेड़छाड़ की या क्राइम अगेंस्ट वुमेन की घटनाएं ज्यादा हैं जिले में, उस एरिया में के पेट्रोल्स डेडिकेटेड किए गए हैं जो सिर्फ यही कार्य करते हैं कि इस तरह के इश्यूज ना हो। ये मेरी लास्ट स्लाइड थी। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारी कमियां इसमें अभी हैं, बहुत सारी आगे हमें बढ़ना है, लेकिन एक ही विभाग है जिसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या एक्ट्स के माध्यम से टाइम लिमिट्स में बांधा गया है। हमें बांधा गया है कि 60 दिन में हमें किसी भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन की जो चार्जशीट या जो भी फाइनल रिपोर्ट है वो बना के देनी है। हमें बांधा गया है कि जो भी इमरजेंसी कॉल्स आती है उसको 24 घंटे के अंदर हमें निस्तारित करना है। तो इन सभी फैसिलिटीज का पब्लिक को इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस कम है, तो आप सभी के माध्यम से यदि ये इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच में जाती है और लीगली उनके क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या ड्यूटीज हैं, इस तरह का हम इंफॉर्मेशन सभी शेयर कर सकें, तो ये जो महिला सेल है या महिला थाने है ये और भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें फर्दर लीगल एड्स और डिफरेंट प्रोविजंस को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरी प्रेजेंटेशन में इतना ही था, बाकी सुझाव या कोई आपके क्वेश्चंस हो तो मैं लास्ट में लेने के लिए रेडी। थैंक यू। थैंक यू मैम। आपने बहुत सारी चीज़ों को हम सबके सामने रखा और निश्चित रूप से हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें इसका एक नई जानकारी के रूप में फायदा पहुंचा होगा। और आपने एक महिला थाना में जो वातावरण है, जो ऑल विमेन स्टाफ, एक जो सेंसिटिव, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, वो कहीं ना कहीं महिला को या विक्टिम को एक हेल्प करता है कि अपनी बात आसानी से वो कह सकती हैं एंड अवेलेबल रिलीफ जो है वो कैसे उन्हें उन तक पहुंच सकती है। आपने बहुत सारी और चीज़ों को भी गिनाया कि ये कहीं ना कहीं एक ओएसटी के रूप में ही कन्वर्ट होता जा रहा है और बहुत सारे और जो फंड्स हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे निर्भया फंड की आपने बात करी।
और नेटवर्किंग भी है, सेफ्टी पे ज़्यादा आपका फोकस है। तो ये इंटरेस्टिंग लर्निंग रही हम सबके लिए, हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। मैम बाद में निश्चित रूप से सवाल हमारे पास में भी अभी हैं, आ रहे हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रहें, प्रेजेंट रहें, और हम लोग आपको भी अप्रोच करेंगे फिर से। Thank you so much, ma'am. Now I request Advocate Audrey DeMello, Director Majlis, for her deliberations on civil society response to PWDVA and impact of COVID-19 pandemic. Uh, Thank you. Audrey, are Thank you you there? so much. Before we start, I'll briefly introduce you. Advocate Audrey is a law graduate from Bombay University, and she has also done post-graduation in management from Narsi Monji Management Studies, Institute of Management Studies. She joined Majlis in 2007 as a program director, and she is working in collaboration with government in two areas. One is PWDVA and another is Rahat. Rahat is basically providing support to survivors of sexual violence. So she is looking after two programs, and Majlis is a non-government organization, and I'm sure before passing of this law, and when it was a bill, Majlis also played its role. And after passing of this law, after 2005, you carried a journey. There's a active support for victims. So I request you, please start your presentation. Thank you, sir. Thank you so much. And we are so appreciative of the Department of Justice to launch this very, very important program, and to understand that unless there is awareness, agar community में awareness होगी तो ही महिला बच्चे जो victims है domestic violence के वो आगे आएंगे और ये law का they will be able to use this law. I want to speak from my experience on the ground. Majlis has been working for the past 30 years with victims of domestic violence and matrimonial disputes. And as you know that since 1983, we have a law on criminalization of domestic violence, where the IPC under 498A clearly says that cruelty to wives is a criminal offense. And I feel that 50% of our population are women. 50% of our population are women, and the statistics are that 1 in 3 women are facing domestic violence. So it is a huge, it was a pandemic even before the pandemic hit us, that every third woman in this country is facing domestic violence, and this is a crime in our country. However, if you notice that as opposed to any other crime, वो फिर theft हो या चोरी हो या जो भी other crimes है, they are treated as criminal offenses. But when it comes to domestic violence, the whole approach of the system is that we have to do counseling, we have to do samjhauta, and we have to send this woman back home. So I am deeply concerned that, considering that if women are facing this acute domestic violence, and we know the issue cases of women of wife murder, women who have died in their homes, which is a huge problem in our country, because अगर महिला मर रही अपने घर में और अपना घर सेफ नहीं है उनके लिए, तो what are we as stakeholders doing for her? So after the passing of the Domestic Violence Act, there was a huge hope that now women would be able to come into the system. Protection officers, service providers, medical officers, everyone will help her to come into the system, and she will be able to get relief when she enters the court, and court will give her justice. But what we are seeing, I just want to share a screen with you. What we are seeing on the ground is that women are unable to women are unable to approach the courts, because हर एक जो स्टेक होल्डर है, फिर वो पुलिस हो, प्रोटेक्शन ऑफिसर हो, या अभी जो नए बने हुए वन स्टॉप हेल्प सेंटर्स है,
वो सभी के एफर्ट्स यही होते हैं कि हम ये प्रॉब्लम को कैसे सेटलमेंट में नेगोशिएट करें और वो महिला को समझौता के होप से हम वहां पे वो प्रॉब्लम सॉल्व करें. But this is creating a huge problem because if cases don't come to court, जो भी सेटलमेंट पास होती है वो महिला अगर अगर ऑपोजिट पार्टी उसको ऑनर नहीं करते हैं, सो देन वो कुछ नहीं कर सकती, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, वो एनफोर्स नहीं कर सकती, एंड देन शी इज बैक टू स्क्वायर वन, वे वो वापस अप्रोच करके बोलती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है. तो वी हैव टू ऑल फोकस on how do we ensure relief to victims of domestic violence. One of the very important stakeholders, sir, is the judiciary. Because if you ask the police, if you ask the one-stop help center, if you ask the NGOs, if you ask women, हर कोई यही बोलते हैं कि जब हम कोर्ट जाते हैं तो मैटर प्रोसीड नहीं होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन वेट करना पड़ता है, ऑर्डर्स पास नहीं होते हैं, हमें वहां पे रिलीफ नहीं मिलती है. So I feel that there is a very, very important stakeholder, which is the court, which is responsible for giving justice in domestic violence cases, and they have to be accountable क्योंकि एक्ट में ये लिखा है कि within 60 days she should get a final order. But let me tell you my experience, my personal experience in practicing in the Bombay courts is that no matter is even heard, the first hearing does not take place in 60 days. वो summons पहुंचती नहीं है other side को. We are getting dates in 1 month or 1.5 months. And procedurally वो इतने lengthy हो जाती है जब सामने वाली पार्टी आती है that even after 1 year and 2 years, we have not got an interim order. And my question would be that what is happening to these women? उनका खर्चा पानी कैसे हो रहा है? वो कहाँ रह रहे हैं? उनके बच्चे के साथ क्या हो रहा है? If her husband has thrown her out of the house and it is taking 2 years to even hear the matter and pass an order, what is going to happen to these women and whose responsibility it is? So I feel like that there is a need for every stakeholder to understand that we have to make this law work for women. It is not enough to say that India में बहुत अच्छे laws है, and it's a fact हमारे पास बहुत अच्छे laws है. We have a very, very good law on Domestic Violence Act. It is a relief oriented law. It's not a punishment oriented law. But yet women are not getting relief. We need to study what is happening in courts. Why is it taking so long for women to get justice, to get simple interim maintenance orders? Because today we are going out and we are training paralegal workers to tell women that you can be protected from domestic violence if you approach this law. But first we have to ensure the law is working, otherwise women will come and they will be dejected, they will be nirasha hoke chale jayenge fir se. So somewhere we have to, of course we have to create awareness, and we have to create awareness that women feel confident to come to the court through the protection officer, through the police in some manner. But we have to also ensure that when she comes, she gets justice, that she gets a maintenance order, that she gets a protection order. ना कि सिर्फ हम काउंसलिंग करके समझौता करके उसको अपने अपने घर में भेज दो, जो बिना बिल्कुल असुरक्षित जाती है. अगर वो काउंसलिंग और सेटलमेंट के साथ वापस जाती है तो वो असुरक्षित जाती है. If we get an order from the court and she goes back to her home, she is protected, she is safeguarded. कल को कुछ भी हो, if the order is violated, she can come back to court and enforce the order. So I encourage all stakeholders, and today we have the NCW on this panel, we have the Ministry of Women and Child on this panel. I request that we make an urgent effort that we implement the Domestic Violence Act the way it was meant to. I will stop my presentation here, sir. I had a poster that I wanted to share, but I am not able to share my screen. One sec, I'll just try. You can share it
with us to email and we can circulate it with our participants. Yes, I will share that poster. It's a poster which shows graphically how the Domestic Violence Act is supposed to work, what is the role of each stakeholder, and how women can get rights from the court by an order. And I just wanted to end by saying that Majlis has, with the help of the Maharashtra state government, we have brought out a domestic violence handbook, which has procedures, best practices, and reporting formats for each stakeholder. And this was signed by both the Chief Justice and the ministry, that they assured to implement these guidelines and work together to implement the Domestic Violence Act. Thank you, Advocate Audrey. And you highlighted very serious situation of women; they are not getting prompt justice, and we definitely need to create a lot of awareness, and at the same time working closely with justice delivery system. Thank you so much, and Just check whether Ashish sir is there. I see. Shri Ashish Srivastav, Additional Secretary, WCD is present there. If, sir, you want to share something with our participants, please. Namaste. Actually, I'm really sorry I couldn't join in the beginning. I got held up somewhere. But it's been absolutely my privilege, and I apologize. I joined late. But I need to thank especially the Department of Justice and Secretary, Department of Justice, Joint Secretary and colleague directors there, and all the officers of the Department of Justice, and of course the lawyers and the stakeholders and the participants in today's this very, very important webinar. Being with the Ministry of Women and Child Development, of course, attaches the highest importance to safety and dignity and security of rights and entitlements of women across the spectrum, and especially in the domestic domain, because as our learned advocate Audrey de Mello just said, if a lady is not secure in her own house, then where else would she be comparatively more secure? Then, given that reality, we need to definitely look at domestic violence from a very foundational and fundamental perspective, very foundational perspective, as to how to really build it very strongly in our society and our family systems, and also in our judicial and our prosecution systems. So very recently, in fact, just last week, I was in Hyderabad. I thought I may not speak the name of the city, but yes, it was not a good experience because the protection officer, I'm just putting across a small instance, but it's a big, it was a big and a disturbing point before. I went to the one-stop center in Hyderabad, and the protection officer was there with me, and more than 600 cases, the DIRs and all had been filed, but the disposal was somewhere in 20s. Whatever be the reason, one of the reasons which came across was that the Peethasin Adhikari of the court was actually, that is a very genuine issue. The courts are having a large number of cases to handle, and the number of benches which are available to dispose cases, they are less. And the situation at the end, it so becomes that there may be probably a tendency to prioritize certain categories of cases and to relatively give a not as high a priority probably to some other categories of cases. So we definitely need to have an overall, whether it be the administrative ministry in the center, which is our ministry, and our corresponding departments in state governments, which are the Women Child Development departments, who are supposed to be putting in place protection officers and service providers, and they need to be dedicated to their jobs and need to be having adequate resources, infrastructure, and time, and training and competence to deal with these cases on a very professional and high priority, in a very professional and high priority manner. We do fail there in at times, but there are also other reasons. Number one, of course, is awareness. Women don't know that there is a very strong act.
which provides civil remedies through the way of courts in an expeditious manner. And that can be really used to bring about a change. And this change in the family systems and family norms, it starts with the sharing of care responsibilities, bachche ka care, bimar ka care, the geriatric care within the family, disproportionate, household distribution of household responsibilities and care work. वो अगर महिला उसको resist करती है घर में, then she stands to face a kind of possibly one of the various kinds of, if nothing else, emotional violence within the domestic domain. And starting with that, it can be of any other category also, as is detailed in the act. The point is कि इन अगर यहीं पर उसको एक stunting environment का सामना करना पड़ता है, so the lady is not able to really blossom to her fullest capacity and to contribute to the economy and the development and growth of the nation and her society as well. And we all stand to lose together on that, because with 50% of the population not being able to or not being permitted to contribute to the growth of the nation as much as they can, otherwise we do definitely, whether be us men or women or anyone else, we do stand to lose. As a nation, we stand to lose. So it's a very, as I tried to put across in the beginning, we understand that domestic violence को level करना, हटाना, और उसके लिए ना सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज की व्यवस्था देना, बल्कि एक जस्टिस की व्यवस्था देना, एक रेमेडीज की व्यवस्था देना जो लॉ दे रही है, हमारे लिए put together, it's absolutely very, very important, and we do need to definitely together work on it. And of course, all of you have huge lot of experience, especially the stakeholders who are participating from outside the government. You have your own field and hands down experience. We in the government have a different kind of an exposure and experience, which has its own value, and we also have the ability and the opportunity to bring about the change. So put together, whether be outside government or whether be us within government, within the Ministry of Women and Child Development or our state counterparts, or within the Ministry of Justice, Department of Justice, Law Ministry, and their state counterparts, and our courts ecosystems, and our public prosecutors, and our protection officers and service providers, we do definitely put together need to make up a lot and to bring about a lot of change. And we do resolve, so with your permission, the Secretary Justice is sitting here. We do definitely want to do the best in it, and we seek your kind support and fullest progress in this. Thank you so much. That's all I think I need to really speak at this point of time. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your intervention and acknowledging present challenges. And definitely, we are working on awareness issue and other areas we can definitely put our resources together. Thank you so much, sir. Now I request Shri Shailesh Srivastav, Director, Department of Justice, to take to address questions of participants. They have shared their questions, and now I request, sir. Thank you, Astush. In fact, when we have circulated this agenda, we have a telelaw program which is basically providing pre-litigation advice to the beneficiaries regarding various laws and provisions and the welfare schemes. We have panel lawyers, and we have circulated the agenda, and we have some questions which were received by us on the topic. So I will go with, of course, many of them are covered in the presentation which have been made till now. We have tried to cover all the aspects of this act, right from the administration and its implementation and the role of the NGOs in providing comfort to the women against this domestic violence. One question which is relevant is that if the domestic violence complaint is to be filed, whether any other person on behalf of the complainant can file this particular complaint, because the woman may fear that husband might snatch away the child or harm her. So this question I give to the panel to answer, or maybe Shalini ji can answer this particular question. Pinpoint कर दो किसको you want to request, either
Can I? Shortly. Yeah. So just wanted to clarify the Domestic Violence Act under the PWDVA 2005. It says that in case of an emergency, अगर कोई महिला घर पे है, वो बाहर नहीं आ पा रही है, उसको ऐसे बंद रखा है, तो anybody on her behalf can inform the protection officer or the police, and they can go to that place and rescue her. But if a case has to be filed in court, then it has to be in the name of the victim. The aggrieved person is the only one who can file her case. No one else can file on her behalf. Thank you, ma'am. मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा. अगर विक्टिम नहीं आ पा रही है, वुमेन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने अभी अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जुलाई 27 जुलाई 2021 से. जो नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 7827170170. इसमें कोई भी कॉल कर सकता है, हमें बता सकता है और हम उसके ऊपर कार्रवाई आगे, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके ऊपर कार्रवाई करें और वहां से हम प्रोटेक्शन ऑफिसर से संपर्क करें या पुलिस से संपर्क करें या और दूसरा स्टेक होल्डर जिस प्रकार की भी मदद चाहिए, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो शेल्टर होम से रिलेटेड हो. NCW will take it on behalf of that woman and take these things further. 7827170170. एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इसी से संबंधित कि नॉर्मली डोमेस्टिक वायलेंस और हरासमेंट जो है इट हैपेंस विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द होम एंड इन नंबर ऑफ केसेस द इलिटरेट वुमन डज नॉट रिमेंबर व्हेन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट हैपेंड. तो उसमें कंप्लेनेंट के पास में कोई प्रूफ ऑफ वायलेंस एज सच होता नहीं है. अंडर सच सर्कमस्टेंसेस व्हाट एक्शन हैज टू बी टेकन बाय हर? Should I answer that? Yeah, please. Yeah. So because I practice in court, I can tell you that firstly, we should all remember that the Protection of Women from Domestic Violence Act is a beneficial legislation. And in a beneficial legislation, we do not need strict proof of violence because it is not a criminal offense. Nobody is going to be put in jail. So there is no strict proof of evidence that is required. It is the statement of the victim which is of most importance. So it is not that if she does not have a medical record or she does not have a police complaint, that her case will not hold any value. All it requires is that she will write, whatever she remembers. Usko तारीख याद नहीं है, तो she will write दिवाली में ऐसा हुआ या जनवरी में ऐसा हुआ, or even if she writes the year or anything, that she just needs to put a few instances, because we are not proving whether it was domestic violence or not. We are seeing what relief she needs going forward. So we must always remember, क्योंकि औरतें बहुत डरते हैं कि मेरे पास प्रूफ नहीं है, मेरे बॉडी में इंजरी था लेकिन मैंने पिक्चर नहीं निकाला, या I don't have proof, nobody will come forward and speak for me. So we have to reassure her as paralegal people that you do not need this proof. She can only give her story to the protection officer, and the protection officer can file the DIR along with the other applications in court. Thank you. Next question actually is for Mr. Ashutosh Pandey. You covered in your presentation that economic abuse is also under domestic violence. So what kind of financial or economic abuse comes under this domestic violence? मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा. महिला नौकरी कर रही है, उसका पैसा ले लिया, पति ने लिया या किसी और ने ले लिया, और उसका फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल से ही समझते हैं, नौकरी महिला कर रही है, पैसा लेके आ रही है, पैसा पति ने ले लिया और पति ने उसका जो है शराब पीने के लिए यूज कर लिया. ये एक एग्जाम्पल है फाइनेंशियल अब्यूज का. अकाउंट महिला के नाम पे है, पैसा निकाला और अपने पर्पसेस के लिए उस पैसे का यूज किया. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक अब्यूज.
जमीन खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, महिला का पैसा है, अकाउंट से निकाला, अपने नाम पे ले लिया. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक अब्यूज. सो the abuse can be any form which directly impact the woman, because if the woman does not want to share that money, it is her money. This is example of economic abuse. जैसा कि हमने पहले वाले प्रश्न में देखा, ये सिविल रेमेडी है, बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है. इसमें हम किसी भी चीज के लिए क्रिमिनल केस की तरह बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कुछ प्रूफ करने नहीं जा रहे. इफ शी सेज, इफ शी हैज दिस काइंड ऑफ she seek for that remedy, she can come forward and ask for that. It can be taken. Thank you. I just want to add to what sir was saying. So you'll have to mute. Sorry. So one of the most basic economic abuse is पति खर्चा नहीं देता है. बेसिक खर्चा पानी जो 125 सीआरपीसी हमारे पास कभी से मतलब 100 इयर्स से है, वो बेसिक खर्चा, बच्चे के स्कूल के फीस, जस्ट टू मैनेज हर होम, जब पति खर्चा नहीं देता है, दैट इज द मोस्ट कॉमन इकोनॉमिक अब्यूज दैट विमेन कम टू कोर्ट फॉर, कि मुझे खर्चा पानी चाहिए. बिकॉज बाकी सब मारना पीटना वो टॉलरेट करती है, वो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जब खर्चा नहीं मिलता, जब बच्चे को वो खाना नहीं खिला सकती है, वो घर नहीं चला सकती है, तब वो एकदम बेचैन होके आ जाती है कि मुझे खर्चा पानी चाहिए, मैं क्या करूं. So most, I would say 80 to 90% of the domestic violence cases are for maintenance. Most of the cases. कि पति खर्चा नहीं देता है, घर से बाहर निकाल दिया, अब मैं कैसे मैनेज करूं, या घर में रह के वो खर्चा नहीं देता है. Thank you. Thank you, madam. Of course, we have not many questions. One last question. This is addressed to Ms. Shalini Agnihotri. Madam, this question is that actually domestic incidents report हमने इस presentation में सबने देखा है. The question is that who is supposed to prepare it and where exactly is the DIR file? This is one part, and second part is actually what is the relationship between section 498A IPC and Domestic Violence Act? फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है, DIR जो है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर प्रिपेयर कर सकते हैं. पुलिस ऑफिसर जिनको डेजिग्नेट किया गया है प्रोटेक्शन ऑफिसर, वो प्रिपेयर कर सकते हैं. डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर नहीं भी है तो SHO महिला थाना या जो विमेन सेल को केटर कर रहा है थाना, उसका ऑफिसर प्रिपेयर कर सकता है. जनरली हर एक एक्ट के मुताबिक हर एक थाने में हमें प्रोटेक्शन ऑफिसर को डेजिग्नेट करना होता है, लेकिन जैसे मुझसे पहले बताया गया है, कमी के कारण या किसी कारण जो है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर सिर्फ एक ही काम नहीं करता है, वो और भी अन्य काम करता है. तो आप जो है पुलिस स्टेशन में जब भी रिपोर्ट करेंगे या महिला थाना में या कहीं, तो आप उसकी रिपोर्ट, और हम उस रिपोर्ट को CDPO को भेजते हैं. CDPO एक एजेंसी बनाई गई है जिसको भी प्रोटेक्शन ऑफिसर की कैटेगरी में ही रखा. और यदि वहां पे भी मसला सॉल्व नहीं होता है तो ये जो रिपोर्ट है ये कोर्ट में, और कोर्ट में जो है एक जुडिशियल ऑर्डर पास होता है जिसको प्रोटेक्शन ऑर्डर के नाम से जाना जाता है, या फिर मेंटेनेंस का जिस तरह से बात हो रही है उसका एक ऑर्डर होता है. उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोर्ट एक अपना ऑर्डर जजमेंट पास करेगी कि जैसे मेंटेनेंस की बात है तो कितना पैसा जो है वो महिला के मंथली एक्सपेंसेस या बच्चों के पालन पोषण में लगेगा, उस तरह से. या फिर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स भी कभी कोर्ट पास करता है कि जिस तरह से ग्रीवेंस है उस तरह का ऑर्डर एक कोर्ट पास करता है. यदि वो ऑर्डर भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो दोबारा जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाया जाए. उसके इंटरवेंशन के बाद भी यदि ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो दोबारा हम कोर्ट में एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि आपका जो प्रीवियस ऑर्डर है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में या फर्दर कोर्ट किस तरह से सही समय में एक्शन लिया जा सकता है. जो सेकंड क्वेश्चन है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं बीच में बोलना भी चाह रही थी. 498A is specifically against dowry kind of violence, जो dowry से related violence है. But domestic violence जो है वो एक completely set of very different kind of crime जो उसको deal करता है. If there is abuse but that is not related to violence, that is not related to dowry, तो आप
जब डाउरी के लिए एक स्पेसिफिक धारा जो है बनाई गई है आईपीसी के अंदर, लेकिन जो बाकी सभी तरह के एब्यूजेस हैं जिसमें जो है डाउरी का संबंधित नहीं है लेकिन एब्यूज हो रहा है, चाहे वो सेक्सुअल फॉर्म में हो, फिजिकल फॉर्म में हो, मेंटल फॉर्म में हो, इकोनॉमिक फॉर्म में हो, फाइनेंशियल फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एक्ट बनाया गया है, क्योंकि आईपीसी के अपने एक लिमिटेशन है, उसमें जो धाराएं बनी है वो सब चीजें कवर नहीं करती है। इसलिए 2005 में ये एक्ट बना और इस एक्ट के माध्यम से बाकी सब चीजें जो डाउरी से संबंधित नहीं है उनकी जो ग्रीवेंसेस उसको हम डील कर सके। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि सारे जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस है वो डाउरी रिलेटेड नहीं होते, सारे जो डाउरी रिलेटेड के केसेस हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस की श्रेणी में नहीं आते। तो ये अलग अलग एक मैट्रिक्स है जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो डाउरी रिलेटेड हो सकता है या फिर डाउरी के बिना भी हो सकता है। तो इस इशू को मैग्नीफाई करने के लिए अगर आप समझेंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है, वायलेंस जो अब्यूज का जो एक लार्जर फॉर्म जो है उसको कवर करता है, और आईपीसी उसमें आईपीसी का स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड था, तो इसीलिए इस प्रावधान को बनाने की जरूरत पड़ी। और फर्दर इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें बहुत सारे एक्ट में भी प्रावधान है, उसके बाद बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं और गवर्नमेंट के भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें इस जो पर्टिकुलर इशू है इसको एड्रेस किया गया है। थैंक यू। Thank you, Shalini ji. We of course have not many questions, but due to shortage of time, we'll share these questions with our distinguished speakers, and on receipt of answer, we'll be preparing an FAQ, and which will be posted on our website, and all our program partners will also be given this info. Now, I will request our secretary sir to give his closing remarks. Sir. Mr. Ashish Srivastav, Additional Secretary, Ministry of Women and Child Development, Ms. Shalini Agnihotri, SP of Mandi, Advocate Ms. Audrey DeMello, Mr. Asutosh Pandey from the National Commission for Women, Mr. Daya Prakash from the Ministry of Women and Child Development, the Department of Justice team led by Mr. Neeraj Gaigi, Joint Secretary, paralegal volunteers, panel lawyers, village level entrepreneurs, and other invitees who have all joined this webinar today. In fact, at the very outset, I must say that I enjoyed every minute of today's webinar. And it was really nice to hear, especially from speakers who have walked the talk. I can make it out from the passion with which they were speaking, the commitment with which they were speaking, the experience they have had. And that is exactly what we need. We need people who have the experience, who have the commitment to spread awareness about this issue of domestic violence, which is being faced by women. Gender justice is something which is something that the government is trying to ensure that there is gender justice. It is championing the cause of safety, security, and dignity of women and even girl child. And therefore, domestic violence is a very important component of it. And we realized it especially during the COVID times that this domestic violence had really multiplied. And also, it was very clear from today's discussion that domestic violence is a very, very broad term, and it includes all kinds of abuse, whether it is economic abuse, whether it is physical abuse, whether it is sexual abuse, whether it is emotional abuse. It's a very, very huge gamut, and the focus of the legislation is that it is more of a beneficial and a reformist kind of a legislation. We in the Department of Justice, we have justice delivery is one of our major mandates, and this is something which the Constitution itself, it's part of the constitutional precept
that justice needs to inform all institutions uh, of the nation, and therefore we must ensure that justice is one of the foremost deliverable that is secured to the people of the country. And it is keeping that in mind that Department of Justice has brought under one umbrella all the justice delivery schemes that we were implementing, and this is called Disha, which is designing innovative solutions and holistic access to justice. And it is a part of that that we decided that we'll have webinars where we can create legal awareness. And the entire DOJ team was of the unanimous view that we should start with something which focuses on the welfare and to address one of the major concerns that women in India face. And we realize that, especially from our experience of the COVID period, we decided to concentrate on domestic violence. And I must say that today's deliberation has really inspired us, and it has given us, rather enthused us in a very big way. And we would continue to hold such legal awareness programs. And in this, we would sort of once again go back to you all as resource personnel. We would also go back to you all and seek names of other resource personnel that you suggest. We would try and come up with a host of topics on which we want to spread legal awareness. So we would like to go back to you all and not only confine it to the Ministry of Women and Child Development, but also other ministries which have a role to play in this. We are going to share all the other questions which have remained unanswered, because unless and until we address the questions in the mind, the whole webinar will remain incomplete. So my fervent request to all the resource personnel is that we'll send the questions to you all. Please prepare the replies so that we can circulate it to everyone. And may we also have your permission that the presentations which you all had made, they were quite good, and it can be a good learning experience for us if we can also spread it across amongst all the stakeholders. One of the posters that I think Advocate Audrey de Mello mentioned, we couldn't have the benefit to see it. Maybe if it comes to us, we will spread it amongst all the stakeholders. So with these few words, in fact, I once again thank you all. And uh, what we heard about the one-stop centers and the role of the prosecution officers, if you all have any suggestions that you have for the Department of Justice, which we need to take from our side to see that we eliminate this domestic violence, we'll be more than happy to work on those suggestions and bring about whatever reformative measures that we can take from our side. Thank you all very, very much from the bottom of my heart once again. Sir, am I allowed to speak? I'm a panel lawyer from UT of JK and Ladakh, sir. Please do speak. Yes, sir. Sir, I'm Suhaila Ali. I'm panel lawyer working with Telelaw from UT of Jammu Kashmir and Ladakh. So no doubt we have good laws for dealing with crime or violence against women. But with regard to Jammu and Kashmir and Ladakh, being a politically sensitive area, and regarding the weather also due to the adverse weather conditions, and especially the people living in the hilly and the remote areas and the border areas like the Kupwara district where the people reside on the LOC, there the women who hardly come out of their homes,
They are confined to their homes and are subjected to domestic violence. They have no information about the laws, about where to approach, who is the authority where we have to approach. They have no information regarding that. Here, I would like to stress upon the awareness programs. The awareness programs should be increased so that the women who reside in the border districts, in the hilly mountainous districts of J&K and Ladakh, they are being provided the information regarding the Domestic Violence Act, regarding the authority, regarding the protection officers, where they can approach, they can discuss their problems, because they hardly come out of their homes. I would like your good self to kindly support us in spreading the awareness programs in these mountainous and hilly districts, in the border areas of J&K and Ladakh, where women are suffering silently. They have no one with whom they can share their distress, sir. Thank you Kindly, very sir. much for your suggestion, and we will definitely see to it that we do some awareness drive even in Jammu and Kashmir. We've actually Yes. been doing it in Jammu and Kashmir and in the northeastern states. But since you have mentioned this, our office will get in touch with you to find out which are the geographical areas where you need this to be done. We will take care Yes. of it. Thank you very much for your suggestion. Thank you so much. Thank you so much. Sir, I would like to draw the attention of everyone regarding the cells at NCW. We have dedicated Jammu and Kashmir cell and dedicated Northeast cell. So regarding the awareness program through NCW, we conduct legal awareness programs in association with District Legal Services Authority. And also we conduct research, empirical research, so that these laws can be known by the people. Recently, we are conducting a study in association with University of Kashmir regarding these things. And with time, as everything is being opening up, so definitely we will move into every region of J&K as well as the remote areas, as Madam has mentioned. Thank you very much for your intervention. The only suggestion that I will have is that since you already have a proper mechanism and a machinery to conduct the legal awareness program, perhaps what is needed is a little bit of pre-publicity, in the sense that if if you start spreading the word through some source a month before that, we are going to have this legal awareness whatever, some webinar or seminar in this particular place, then maybe it will be easier for more and more people to join and for more popularity to your awareness programs. Thank you.